Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well, preparing for the upcoming examination with full gist and enthusiasm. This is a video session on daily news and editorial analysis dated 4th of December. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. The analysis of the news will cater the aspirant who will be appearing for the civil services examination, state public service commission examination, and one-day examination conducted by various state and union agencies. So we'll see that analysis from the examination perspective. But before starting this session, I would just like to give an emphasis on the part of upcoming prelims examination, which is scheduled at 26th of May 2024 as per the UPSC calendar for 2024. And this is the time has come that you need to put emphasis on practice a lot of MCQs question जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ के questions को practice करें. And this is the time that you need to give more emphasis on MCQs. To help you out, we have a dedicated test series program known as NISHA, that is All India Test Series program. This will comprise of 4900 plus questions. Along with this, we'll also provide the discussions, the video discussions, demo test, and free magazine. So do check it out. You can avail the benefit offline and online. So do check out our website. और अगर आप registration करना चाहें, you can use this QR code for further details. Now we'll start the news analysis. First, we'll see the highlights. Then we'll proceed further with the detailed analysis. So the first highlight of news of the day is about the part of agreement that India has actually not signed when it comes to the declaration of climate on health. We'll see the detail to this. Second important news talks about the Monetary Policy Committee by the RBI. They are expected not to change the repo rate. Third important news talks about India and Maldives that has agreed for the withdrawal of the forces. The second last news talks about the Philippines that has raised concern with the Chinese ball spreading around the region, and concluding the session with the editorial that talks about India's the disability inclusion and power of something very important that has come up with the emphasis on how the part of inclusion should be promoted for differently abled people, something very important, a favorite topic for the UPSC mains examination person. Let's get started with the detailed analysis of the news one by one. So the first is about the COP28 Health and Climate Declaration, something very important. I think most of you must be aware about COP28. This is a summit which is taking place in UAE. UAE में ये summit हो रही है. Dubai is a place where it is actually taking place. Now, this declaration on health and climate is something where India has refused or India has refrained from signing this agreement. Why? This is a big question that you need to understand as an aspirant. क्यों इंडिया ने रेफरेंस किया? इंडिया की बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट है हेल्थ सेक्टर को लेकर के. दैट इज द रीजन वी कैन नॉट हैव सच शॉर्ट प्लेज कमिटमेंट इनिशियली. So I'll tell you why we'll put emphasis on that as well. But first understand what is the health and climate declaration all about. So what is this climate and health declaration? So basically इस declarations में कुछ critical चीजें को highlight की गई है where it call for the climate change, global health emphasis that need to be there for substantial reductions in the greenhouse gases. जो greenhouse gases की emissions हैं उसमें किस तरह से reductions की जा सके through the practices that has been there is the main theme or idea behind the health and climate declarations. Now this declarations call for climate actions जहाँ पे benefit होगी for the sustainable greenhouse gases emissions के reductions में, and this will call for the efforts that not only the member countries apart from the joining countries all will have to take the due importance and the care that the part of greenhouse gases emissions is on a lower side. The 28th UN Conference of Parties Declaration on Health and Climate was actually signed by 123 countries. तो total 123 countries ने इसे sign किया है. And United States, United Kingdom, Germany, Australia, and European Union were the part of the signatory. India refrained to sign from the COP Health and Climate Declaration. Now, अगर central objective की बात करें, if you look at the part of aim and objective which is there for this part of the declaration, तो इसमें सबसे core objective है, it's to commitment to the common inequalities within the member countries. Among the member countries, हर एक countries के पास बेसिकली ये ऑप्शंस होंगे
that they need to actually collaborate in terms of reducing the greenhouse gases emissions. Now it is emphasized कि जो एक्सकलरेट करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टारगेट, जो एसडीजी के टारगेट्स हैं, स्पेसिफिकली एसडीजी 3 के जो टारगेट्स हैं, दैट नीड टू बी अचीव्ड विच कॉल फॉर गुड एंड वेल-बीइंग, गुड हेल्थ और वेल-बीइंग स्पेसिफिकली मेंशन है. This is again important for your mains examination. If you're writing in mains, you can specifically highlight about SDG goal 3, which call about the good health and well-being. The objective is to promote the sustainable practices within the health sector and to contribute in the broader climate goals. These are some of the main objective and rationale behind this declaration. Now, coming to the main agenda of the discussion, that why India has actually refrained from signing this declaration. India ने actually क्यों नहीं sign किया है, क्या ऐसे reasons हैं? So first and foremost, you need to know that India has concern over the feasibility of implementation of this declaration. अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें इस डिक्लेरेशंस के एडॉप्टेशंस में, इफ यू स्पेसिफिकली लुक इनटू द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस को लेकर के, India has said that cooling in the healthcare sector is something that, I mean, as of now, India's healthcare sector is still mushrooming. It is taking some of the point where we are actually factoring out कहाँ पे और ज़्यादा फ्लरिश की जा सकती है. तो at this point of time we cannot reduce the greenhouse gas emissions from the healthcare sector. Especially इंडिया ने अपनी reluctancy इस बात पे भी दिखाई है that we are committed, we cannot be committed to such short term goal. जो ST गोल है, जो शॉर्ट टर्म गोल है, उसको इंडिया अभी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अचीव नहीं कर सकती है. The commitment to reduce the greenhouse gases emissions, the GHG, is actually the cooling health sector. It will restrain from the infrastructure potential and disrupt the healthcare services in India. Now, COVID-19 की अगर बात करें, India has been grooming up with the part of healthcare infrastructure, specifically healthcare की जो infra है उसको boost करने पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है. And even to fact that this is something which is invariably required for India. अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कई ऐसे bottlenecks, if you look at the part for रूरल इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है हेल्थ केयर को लेकर के जो गवर्नमेंट को ऑगमेंट करनी है. नाउ दिस इज अ कंसर्न, दैट इज अ रीजन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी डेलीगेशंस भी कोप 28 के इस इवेंट में प्रेजेंट नहीं किया. दे वर कंप्लीट एब्सटेंटी फ्रॉम इंडिया. नाउ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की अगर बात करें, इंडिया हैज कैटेगोरिकली स्पोक अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन एंड स्पेसिफिकली टू द यूएन कि इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशंस हैं वो किस तरह से दिस हैज इंक्रीज टू 4% फ्रॉम लाइक 2020 अगर 19 की बात करें, दिस हैज रीच अप टू 2.6 बिलियन ऑफ द टर्म. And energy contributions contribute mostly from the anthropogenic sources, which is 75%, जो 75.81% है, that is coming from the anthropogenic source being the single largest. उसके बाद जो second important sector है जो उसमें contribute करती है, that is the health agriculture sector. Then third we have industrial process and product uses. This is contributing 8.14. If if it's possible to remember, make sure you remember this because you can definitely quote this in the mains examination. अब data format पे से जरूर लिख पाएंगे. Now waste contribute around 2.34%. So these are the total greenhouse gases emissions from India, which India has actually submitted as a communications to the United Nations. नाउ क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट हैं हेल्थ पे, दिस इज ऑल्सो यू नीड टू नो. जो खास करके कोप 28 की डिक्लेरेशन हुई जहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात की गई है क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को लेकर के. सो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ वाज द टू मोस्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दैट वाज एक्चुअली फोकस्ड. और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की बात की गई है. फर्स्ट इज द मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग. यू कैन कनेक्ट विद दिस विद द एसडीजी गोल 3 एज वेल. उसके अलावा प्रिवेंशंस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो नॉलेज है, इंडिया इज एक्चुअली हैविंग अ रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. और खास करके अगर बात करें आयुर्वेदा की, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम. प्रोटेक्टिंग द लाइवलीहुड एंड कल्चर, डीलिंग विद द क्लाइमेट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन. तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ऑब्जेक्टिव थे. दीज आर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिक्लेरेशन दैट इज देयर. The declaration aim for prolonged holistic approach जहाँ पे mitigating of the diverse health challenges posed by the climate change should be there. तो ये कुछ impact है और कैसे उसको overcome करनी है. These are the point that has been highlighted. Now moving ahead with the other news, that is the RBI monetary policy and repo rate. Basically, if you look at the part where RBI will be coming up with the detailed part of the repo rate,
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो सारे डिसीजन को एक्चुअली यूनानिमसली डिसाइड करती है दैट व्हाट इज द रेपो रेट दैट नीड टू बी देयर एंड it is expected that this time the lending rate will be unchanged to 6.5% with the upcoming monetary policy review which is scheduled for 6th and 8th of December 2023. नाउ क्या रैशनल है इस तरह के डिसीजन की बहन में टू मेंटेन द स्टेटस को आरबीआई ने एक्चुअली स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है क्या इसके रीजन है द सेंट्रल बैंक हैज सेड that it is expecting to retain the monetary policy with the withdrawal of commodities. This is a term that has been used. और खास करके अगर बात करें vegetable prices कि we have seen that the inflation specifically in the vegetable prices the food prices has taken a surge, right? And mounting to the inflationary risks basically अगर economic challenges की बात करें the part of the people purchasing power में इसकी काफ़ी ज़्यादा impact दिखी अगर rate बढ़ा दी जाए तो इसके impacts और बढ़ सकते हैं now this can be again important questions for MCQs के जो सवाल हैं prelims examination में वहाँ पे भी इस तरह के factual based questions आपके लिए relevant होंगे the inflations were inching up, the food inflation is going on a rise, and it is expected that this time also we can expect the rise in the prices of onion and tomato. This is what is the anticipations from the expert. So that in no case, no RBI is actually thinking for lowering the rate or even to maintain the status quo. Now, headline inflations की अगर बात करें, the RBI governor has actually categorically said that headline inflations has been vulnerable for recurring and overlapping food prices, right? और global factors में adverse weather conditions में सारी चीजें देखी गई हैं. In such scenario, the monetary policy need to remain watchful and actively the part of disciplinary with the support growth, right? This is something which is actually working out. और headline inflations को ध्यान में रखते हुए RBI ने सारे decisions को लिया है. Now, GDP and inflation's projections की बात करें, if you look at the quarter growth which has been there for quarter two for the financial year 2024, it has been witnessed that overshooting estimate देखी गई है. This is 6.5. RBI में revise it to the growth forecast marginally. कुछ marginal decrease इसमें देखी जा सकती है, but I personally feel this will remain close to 6.4 or none less than that, right? So RBI may revise the headline inflation forecast, may kept it 5.4% for the current fiscal. This can be only care when the MPC come up with a detailed press release on this. It will be provided with the relief to the borrower with equated monthly installment will not increase. अगर ये rates नहीं बढ़ती हैं तो जो EMI के rates हैं actually most people are actually availing this EMI either through home loan, consumer durable loan, personal loan, car loan, vehicles loan. So उसमें EMIs में भी किसी तरह से impact नहीं दिखेगी. And moving ahead with the other news that India agrees to pull up soldiers from the Maldives. This is something which Maldives has been demanding after a change in the governance. अभी recent में Maldives के नए president appoint हुए and he has been asserting on the part where they are looking for independence and sovereignty. Now, there are other reasons to that and we will see how the China's influence in the region has been actually inevitable in this context. But India has actually agreed to withdraw the troops from the Maldives. There will be some due process that will take place कि किस तरह से India withdrawal कर रही है. Immediately the withdrawal will not take place, but this is to the fact that India will withdraw forces from Maldives. Now, withdrawal of forces की अगर बात करें, as I've told you, the new change in the government has actually called for the where they don't want any forces to be deployed in the country, and this is something where 77 Indian military personnel are deployed in the region. और इंडिया में 100 bilateral agreement साइन किए हैं between India and Maldives. और अगर मालदीव्स की स्पेसिफिकली बात करें इंडियन ओशन रीजन में दे हैव बीन प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल स्पेसिफिकली इंडिया की जो सागर इनिशिएटिव है it has been given a due importance considering the fact that the neighborhood first policy है इंडिया की उसमें मालदीव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे देखी जाती है. Now, China's and Maldives relation has been growing. It has been on surge. So we have seen that China's and Maldives share a good relationship, right? और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा investment भी देखे गए हैं Chinese की तरफ से. They have been making quite good numbers of investment there. And just to give an example, like China में, I mean, if you look at Maldives में actually 1200 के आसपास वहाँ पे एक्चुअली में आइसलैंड है बट ओनली 100 ऑफ द आइसलैंड आर एक्टिव, राइट? और इसी आइसलैंड को अपॉर्चुनिटी देखते हुए चाइना ने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई है मालदीव्स में. Moreover, only 10 islands in the Maldives has been leased out to China. They have been leasing out for security and other purposes. Even this is not known to in public that why they have leased out. And the report says that China is also stationing their ship
conducting the military operations to a larger scale. So, I mean, this is the reason India is actually concerned about. And they have been talking about the free trade agreement with the Maldives from China. So FTA को भी लेकर के चाइना और मालदीव्स के बीच में agreements होती रही हैं. They are also looking forward to further increase and augment. Now, moving ahead with the other news, Philippines raised concern over the Chinese boat. I mean, that has been witnessed by the Philippines Navy. They have been actually reporting this, or report kya hai, that close to 135 military boats from China was actually reported in the South China Sea. So this is a concern. I mean, Philippines has been raising for quite long time, but they are finding it something which is the concern has been escalated to such level where they need to report it, and the government definitely need to take action on this regard. So Philippines response की अगर बात करें, the Philippines Coast Guard has been actually growing with the numbers, specifically in the Western Reef, जहाँ पे इसको Philippines में Julian Philip Reef भी कहते हैं. I'll give you the map also in a while so that you can able relate it. The number of Chinese maritime vessel has increased in the past few. This is what the Philippines Navy has actually been reported. और 135 बोट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं. अर्लियर इन नवंबर इट वाज 111. तो ये नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है. Now this is important for you to take a note कि Wilston Relief है का. This is close to Spati Island. This can be an important questions for the prelims examination. आप MCQs में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. Other than this, the 9 dash line, which is again important for the examination, you can see these are the 9 dash line which has been there. और यहाँ पे इस रीजन में खासकर की जो चाइना की डोमिनेंस की बात करें, it is on a higher side. So this is how the things has been working. These are the partial island, Spati Island, and other area is all coming with the Chinese dominance. Now South China Sea की concern की बात करें, China claim most of the South China Sea. China की dominance not only for this time, they have been doing it for quite long, and India has already raised concern about the neutrality in the region. उस वजह से भी क्वाड जैसे इंपॉर्टेंट फोरम की गठन की गई है. Philippines, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam has been claiming that this region is believed to have a rich petroleum reserve beneath the water, which actually should be distributed and it should be given right to each and every neighboring countries where only China is making the dominance. But China and Philippines has been making involvement in the number of incidents. Philippines causing China with more aggressive part, जहाँ पे साउथ चाइना सी में 9-9 के आसपास भी चाइना ने पूरी अपनी sovereignty, I mean they are not maintaining that and they have been capturing the entire region. So this concern as a geopolitical level is a very important concern. Now moving ahead with the editorial for the day that talks about India, the disability inclusion and the power of PI, something very important. I mean it has given impetus and focus how that disability rights should be actually promoted और welfare की अगर बात करें जो differently abled है उनको किस तरह से गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है. Now what are the issues that I'll be discussing? First is the case for inclusion, then we'll see the greater challenge, the Spark project and the way forward. Now disability, if you look at the disability part, vulnerability in the social, economic and gender domain remain as one of the most competitive part. Disability में खास करके सोशल इकोनॉमिक और जेंडर डोमेन्स में ये काफ़ी हद तक देखा गया है दैट पीपल आर एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड. ग्लोबली 1.3 बिलियन पीपल विच इज इक्विवेलेंट टू इंडियाज टोटल पॉपुलेशन जो है वो लोग डिसेबल्ड हैं एंड दे सम इन अदर फॉर्म आर एक्चुअली मेंटेनिंग द पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी. 80% ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे इनकी रेशियो 80% एंड 70% आर लिविंग इन द एरिया ऑफ रूरल एरिया. सो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. खास करके ये प्रॉब्लम ऐसे जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हद तक उभर के आई है. इवन द पीपल आर नॉट एक्चुअली एबल टू ओवरकम दिस चैलेंज, राइट. सो ये ज़रूरी है कि हमें इसे ओवरकम करनी है और इसे अगर ओवरकम नहीं किया गया तो पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन दिस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. Now, if you look at the data, these data are again very important for the examination point of view. आप देख सकते हैं 1 billion people who are actually living worldwide with a part of disabilities, and these are the data that I have already shared with you. You can take a note of this. 15% of the number is below the severe disability, close to 190 million people. So ये काफ़ी important facts, informations हैं जो आप अभी मेंस एग्जामिनेशन में actually use कर पाएंगे. Now, case for inclusion at the outset, it was being said that अगर GDP में contributions बढ़ानी है,
I mean, close to 6 to 7%. I mean, starting from 3 to 7%. If you look at the GDP contribution, अगर ये disabled contribute करे, तो इन आईएलओ के मुताबिक इनकी contribution 3 to 7% overall GDP में बढ़ सकती है. Everyone has a right for equal treatment, equal opportunities, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोरम्स में इसकी बात भी की गई. आई टोल्ड यू द स्टार्क विच इज वाज एक्चुअली देयर बाय द रीसेंट इनिशिएटिव बाय आईएलओ. विल सी दैट एज वेल. द करंट एम्प्लॉयमेंट सिनारियो अगर देखें, फ्यूअर जॉब्स हैं डिसेबल्ड के लिए, और कई ऐसे वर्क प्लेस भी नहीं है जहाँ पे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कुछ एक्चुअली फीजिबल किया जा सके. सो दिस थिंग्स आर मिसिंग. एडिशनली द एक्सक्लूजन्स प्रैक्टिस विच इज देयर, दिस ऑल्सो वायलेट्स द पार्ट ऑफ यूएन कन्वेंशन. जो यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशंस है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसकी भी कहीं ना कहीं वायलेशंस है. वी नीड टू इंश्योर अ प्लेस वेयर एवरीवन शुड बी गिवन द राइट बीट फॉर एनी जेंडर और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस. Now, greater challenge in rural area, specifically if you look at the part, India में अगर बात करें, इंडिया में या फिर रूरल एरिया की बात करें, so rural area poses the part of, I mean the part of challenges which still exist. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्कीम लाई है जिसमें स्पेसिफिकली यूडीआईडी, दिस यूडीआईडी स्टैंड फॉर द यूनिक आईडी फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, जो कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के थ्रू इम्प्लीमेंट की गई. ये क्रूशियल अवेयरनेस है गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ डिसेबल्ड को स्पेशली रिकॉग्नाइज की जाती है. इवन फॉर जॉब्स, इफ यू सी द एडवर्टीजमेंट विच इज देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी होती है रिजर्वेशंस की. The process start by building the capacity to the grassroots community and will advocate for the inclusions. और ये ज़रूरी है कि रूरल एरिया में इस तरह के चैलेंजेस को ज़्यादा काउंटर किया जाए. एंड द लिमिटेड एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन शुड ऑल्सो बी प्रमोटेड. जहाँ पे अगर लिमिटेड एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन होगी, उस सेक्टर में ग्रोथ की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगी. तो वी नीड टू इंश्योर दैट एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में भी दिए जा सके. Now there's a project called Spark project. This is again something important. What does the Spark mean? Sparkling Disability Inclusion for Rural Transformation Project. ILO की ये प्रोजेक्ट है. ILO के साथ साथ IFAD that is International Fund for Agriculture Development और Women Development Collaboration जो महाराष्ट्र की है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. दिस कैन बी रेलिवेंट स्पेसिफिकली फॉर द मेंस. अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर हाईलाइट करें. दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन देयर यूजिंग द पार्ट वेयर द विलेज पीपल आर बिन आइडेंटिफाइड. उनको स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है और जो डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर सेंटर्स हैं वहाँ पे इनको ट्रेन किया जाता है. दिस आर एंगेज इन द कम्युनिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये सारे लोग एक्चुअली डिसेबल्ड को अवेयर करने में, उनको एजुकेट करने में मदद करती है. द स्पार्क प्रोजेक्ट also aim to bring the attitudinal shift toward the disability right from the societal to the administrative level. So it is working on a bottom up approach. Bottom up approach की कोशिश है यहाँ पे सारे लेवल पे basically the things can work. Now the way forward, a bottom up approach is something which is working out as I've told at the beginning. और ये ensure करती है that recognize should be given to the every individual who is having a disability part. और ये ज़रूरत है कि ये इंक्लूसिविटी प्रमोशंस के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है. एंड दिस कैन बी ऑल्सो डन विद द पार्ट ऑफ ट्रिपल मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काम की जा सकती है. अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कैन प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ डिसेबिलिटीज़. कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं, बट वी नीड टू इंश्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्रोविजंस हो कि कुछ डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी वहाँ पे वैकेंसीज रखी जाए. सो दिस इज हाउ वी कैन कम अप विद द फिजिबल सॉल्यूशंस फॉर द डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स. Now answers and discussions to the yesterday questions, that is for Saturday. For first, the correct option is B. मैंने आपसे कैस के बारे में पूछा था. इसके options 1 correct है और options 3 is correct, options 2 is not correct. So check out what you have marked. Now the second question is about the Celtic tide. The option यहाँ पे option C है, मतलब option 1 और option 2 दोनों options यहाँ पे correct. Today's MCQ for practice. The first question is about ADB. The members of ADB are from the Asian Pacific, does not project under the private sector. The vote share proportions to the capital subscriptions to the member. So do check out for the correct option और participation के लिए आप क्वेश्चन नंबर लिख करके अपने जो करेक्ट ऑप्शन है A, B, C या D हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. The second question for the day is one station, one product. It's a Ministry of Railway initiative. It provides locally developed sales outlet for the indigenous product.
So do check out for the correct option. Write your answers in the comment section down below by mentioning the question number. So you can also practice other question in our social media platform that is published on daily basis. This was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern about test series, admissions, programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.